Tata is a great group and we should admire Tata Group because one side Tata is spending on the IPL advertisement. You can easily see on IPL. Other side, Tata Group company Tata Motors is raising debt. Now, what do you call this? That the parent company is spending a heavy amount in IPL and group company Tata Motors is taking a debt. I do not know about paid media, but I simply call this stupidity. Because no sensible person in the globe be able to justify this move. India is really a great country. I hope you are watching IPL and you are witnessing a company called NeoX. According to the public information, NeoX registered 168 crores 168 crores worth of loss in the last 2 years. And irrespective of having that, NeoX is offering 7% interest rate to the customer. Now, what do you tell this? I don't think a sensible person will call this a business. How come a company who is loss making taking money from investors? Byju's, who is a loss making company, spent near about 300 million US dollars. God knows from where they got this funding, buying a company called White Hat Junior. White Hat Junior. And you would be very surprised to know that in financial year 21, White Hat Junior reported operating revenue of near about 484 crores. You heard me right, 484 crores. And the loss is 1690 crores, near about 1700 crores. Foreign portfolio investors sold near about $18 billion
of Chinese debt. And do you know the reason behind this highest stupidity? The highest stupidity is because they are expecting Federal Reserve to hike the rate, which means they would be getting additional money if they would be investing in US as compared to China. Do not put all your eggs in one basket. This is something even a 10th failed person is aware of. But I think this theory nowhere relevant to foreign portfolio investors. And that is the reason they sold near about 18 billion in the Chinese market. Byju's, who always claimed to be an edtech firm, is now launching physical tuition centers in India. Physical tuition centers. And the corrupt and sold media of India do not have the guts to ask from Byju's that till now you are shouting that you are an edtech platform. And now you are launching a tuition center. Common sense. Tuition center is a fixed cost item. Wait for the time and Byju's will again fail here also. According to the Japanese firm Nomura, Federal Reserve to hike by 75 basis point in their upcoming meetings. I would like to thank you, Nomura, for this prediction. Because if Federal Reserve would be hiking by 75 basis point in the upcoming meetings, then it is an end of show. Because US, who is already standing at a debt of near about $32 trillion, would have a substantial jump in the finance cost. And I request Federal Reserve to please hike. According to the public information, in 2014, the fiscal deficit of India was 5.10 lakh crores,
but the projected fiscal deficit for 2022 is near about 16.6 lakh crores, which means in the last 8 years, I repeat, in the last 8 years, the fiscal deficit of the government is more than 3 times. Because 2014 it was 5.10 lakh crores. And very surprising fact is the fiscal deficit is consistently moving up, but unfortunately we are ignorant. आज दुनिया के सारे स्टॉक इंडेक्सेस डाउन हैं। उसका रीजन कि नोमूरा, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मार्केट में हाइप मचा दिया। और वो हाइप क्या है कि फेडरल रिजर्व अपनी जून और जुलाई की मीटिंग्स में 75 बेसिस पॉइंट का हाइक करने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि फेडरल रिजर्व 75 बेसिस का हाइक करे, तभी तो यूएस की इंटरेस्ट कॉस्ट ऊपर होगी, और जब इंटरेस्ट कॉस्ट ऊपर होगी तभी तो यूएसडी क्रैश होगा। प्लीज 75 बेसिस नहीं, और भी हाइक करो। Now, whether this is Byju's, whether this is Unacademy, Eruditus, or any other so-called edtech platform, they all are in losses. Do you know, today I was doing my research on the Google, I got to know Unacademy, who just fired around 1,000 people, according to the public information, is now opened Unacademy stores. Guys, one thing I really fail is that how come these loss-making companies always came up with an idea whose start and end is always the loss? Stupidity. महिंद्रा का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका लॉस था 744 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका लॉस हो गया 430 करोड़। क्या आज तक आपने कोई स्टार्टअप
ऐसा सुना है जो प्रॉफिट में हो? अगर ये स्टार्टअप्स सारे 700 करोड़, 500 करोड़ या इतना ज्यादा लॉसेस ले रहे हैं, तो समझने वाली बात ये है कि ये इतनी वैल्यू पे कैसे आ गए। लेकिन भारत एक महान देश है, क्योंकि यहां पर कोई भी इन स्टार्टअप से नहीं पूछेगा कि तुम्हारी इतनी वैल्यू कैसे हो गई। एक समय था जब स्टीव जॉब्स ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एप्पल का प्राइस वो खुद डिसाइड करते हैं, ना कि कस्टमर्स। क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, और अगर दम नहीं है तो नहीं बाय करेगा। आज एक स्टेटमेंट आई कि एलआईसी के आईपीओ का साइज कट हो सकता है और एलआईसी की वैल्यूएशन 40% तक कम हो सकती है। 40। ये देख के मुझे स्टीव जॉब्स की बात याद आ गई। वो बिल्कुल ठीक कहते थे कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो प्राइस कट करने का तो मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने पूरे का पूरा, कहते हैं ना, एक तंत्र खड़ा कर दिया है। और वो तंत्र ये है कि यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है, जो ऑलमोस्ट $32 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है। ठीक सुना, 32 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है। उस पे हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। आज का वो समय है जब हम उस टाइम में जी रहे हैं जब मीडिया को चोर कहना भी उनकी इज्जत है। ऐसे कई इंटरनेशनल चैनल्स हैं जिन्हें मैं डेली वॉच करता हूं, और उनमें से एक चैनल की भी औकात नहीं है जो यूएस के डेट पे बात कर ले। इसे कहते हैं एक पब्लिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जिसपे कि आज मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। फ्यूचर ग्रुप की बुक्स में नियर अबाउट 28,000 करोड़ का डेट है। नियर अबाउट 28,000 करोड़। और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है
कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो इतना जबरदस्त है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो 28,000 करोड़ पे मिनिमम जो हेयर कट होगा वो आप मान के चलो बहुत ज्यादा होगा। और हेयर कट का मतलब होता है कि वो पैसा Russia is doing a wonderful job, not in Ukraine, but as far as the FX reserves are concerned. You would be surprised to know that Russia is cutting the US dollar extensively. And as we speak, Russian foreign exchange reserves have only 10% US dollars. Approximately 23% of the investments in the FX reserves done in the gold. Russia is very clear on one side that in the long run, gold would be the most powerful as compared to the US dollar. And I'm also having one opinion, not because of Russia-Ukraine war, that US dollar is set to lose, probably in another couple of years. इस वीक में मैं टाटा का जो ई कॉमर्स वेंचर है बिग बास्केट, उस पे एक डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बनाऊंगा। लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि जो बिग बास्केट है वो लॉस में है। एक समझ जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि टाटा ग्रुप की कंपनीज में इतना डेट है और इतना ज्यादा पैसा फाइनेंस कॉस्ट में पे किया जाता है, तो फिर टाटा ग्रुप ई कॉमर्स में एंट्री क्यों कर रही है जहां पे कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ? ये मेरी समझ से बाहर है। ऑफ कोर्स इंडिया की मीडिया तो कभी भी टाटा ग्रुप से सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन डेफिनेटली मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा।